अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज का हमारा मौजू है मेपल चाय। दिस इज़ सेशन 2 ऑफ मेपल चाय। आज हम यही बात करेंगे कि हम किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, हमारी लाइव्स इन पाकिस्तान कैसी थी और हमारी लाइफ हियर इन कनाडा कैसी है। तो असद भाई और मैं अभी शॉर्ट इंट्रोडक्शंस करेंगे क्योंकि हमने यही सोचा था कि पिछली बारी हमने इतना इंट्रोड्यूस नहीं किया अपने आप को कि हम किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, कौन लोग हैं। तो अभी हम असद भाई की हिस्ट्री, असद भाई की फैमिली हिस्ट्री सारे डेल्व इन करेंगे। तो असद भाई, आप जो हैं, आप अपने बारे में यही बता दें कि आप किस शहर से ताल्लुक़ रखते हैं और आपको कनाडा आए हुए कितनी देर हो गई है। हम वी टच्ड अपॉन इट लास्ट टाइम बट वीड लाइक टू डेल्व इनटू इट मोर। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, क्या हाल है, कैसी तबीयत है सबकी। जैसा कि आप जान सकते हैं, मेरा नाम असद है। मैं हूँ गुलिस्तान जौहर कराची से, और मुझे 4 साल हुए हैं वहाँ पाकिस्तान में रहे हुए। पला पड़ा सऊदी अरब में हूँ, 15 साल वहाँ रहा हूँ। तो उसके बाद मैं गया था पाकिस्तान, कराची में रुका 4 साल 2020 तक। तो उसके बाद यहाँ पे कनाडा आ गए हम लोग। और कराची आने से पहले I was the most whitewashed Pakistani you'd ever meet. जो बर्गर बोलते हैं ना, असल बर्गर का टर्म पता है ना आपको? बर्गर का टर्म ये है भाईजान कि उसको ना कल्चरल आइडेंटिटी के बारे में कुछ पता ही नहीं है। You know that, right? कल्चर फॉर द नॉन पाकिस्तानीज इन द ऑडियंस, बर्गर का मतलब होता है सस्ता अंग्रेज बेसिकली। हाँ, इसका सस्ता अंग्रेज। जो धोबी के कुत्ते होते हैं ना घर के ना घाट के, ना इधर के ना उधर के, ना वो देसी होते हैं ना वो गोरे होते हैं। उनने बाहर जाना होता है, गोरों से बात करनी होती है, देसी खाना खाना है, सही बात है। देसियों से बात करनी होती है। उनको बाद में आइडिया होता है कि भाई हम तो इतने देसी ही नहीं, हम तो अंग्रेजी बोलते हैं। सही बात है, सही बात है। coming back to your story. तो बस ऐसे ही मैं कराची में रुका था। उससे पहले तो मुझे कुछ आइडिया नहीं था पाकिस्तान का कल्चर क्या है, लाइक यू नो व्हाट इट मींस टू बी पाकिस्तानी। तो वेट, इज दिस स्पीकर वर्किंग? Test. Oh, it is working. Check. Oh, it's this. Oh, I see. Oh, sorry guys. One sec. I think it's this. Testing. Okay, yeah. Testing, it's better now. Yeah. I'm just gonna cut that part out. Yeah. Check. And now I can't hear myself. Nice. Test. Okay. Sure. Okay, cool. Getting back into it. Getting back into the story. असद भाई जो हैं वो अपनी ये स्टोरी बता रहे थे कि आप जो हैं किस तरह पले बड़े सऊदीया में, यहाँ कराची आए, कराची का कल्चर आपने सीखा और अब कनाडा आ गए। तो ये तो बड़ी तफरी किस्म की स्टोरी है। मैं जब कराची आया था तो मैंने सिटी स्कूल में एडमिशन लिया था। सिटी स्कूल का वो पता है कि इट्स लाइक बॉयज़ ओनली स्कूल, राइट? तो उधर मुझे 5 लड़के मिले, शाउट आउट टू दोस गाइस। उधर मुझे आदिल मिला, रिबाल मिला, शयान, रबीत और हैदर और राहिम। ये ना समझ ले मेरी शपाटरों की ग्रुप बन गई थी फुल। उनसे मुलाकात हुई और बस उनकी वजह से मुझे थोड़ा कराची का कल्चर के बारे में पता चला। जैसा कि 9 लोग एक रिक्शे में ठुसे पड़े हुए हैं। शोर शराबा जो होता है, कराची की लिंगो वगैरह सब उन्होंने ही सिखाई है मुझे। एंड उसके बाद फुल कराची वाला बंदा जो होता है ना, वैसे ही बन के। अब ये लड़का जो है बड़ा मल्टी फैसेटेड लड़का है, बड़े बहुत से रूप हैं इसके। अब भाई गोरों के साथ जाता है तो हे व्हाट्स अप, हाउ आर यू डूइंग बडी, I'm having Chardonnay on the weekend से लेके जाके फुल शिपाटरों की तरह उर्दू बोलता है। ये बिल्कुल वो मैली उर्दू जो होती है ना, गवारों वाली। बहुत से हमारे मल्टी फैसेटेड हैं, बहुत से काम करते हैं। तो आपका क्या सीन है भाई? आप किधर पले पड़े हुए हैं? तो कमिंग बैक टू मी, मैं जो हूँ लाहौर में सारी ज़िंदगी गुजारी है मैंने, और लाहौर में ही पला पड़ा हूँ। और हमने यही सोचा कि चल परदेश चलते हैं, हम अब फ़ौरन जाते हैं। और हमने फिर लाहौर में सारी ज़िंदगी गुजार दी। हमने सोचा चलो बाहर चलते हैं। अच्छा, पैदाइशी भी लाहौर? पैदाइश से अब आपको पता है पाकिस्तान में कैसा होता है, पेपर पे कुछ और लिखा होता है, पैदाइश वो कुछ और क्या बोलते हैं उसको, एक तो नादरा का वो बेफॉर्म होता है और एक डोमिसाइल जो होता है। तो वो सारा फ़र्क है, वो सारा उसमें सेटिंगें कराई हुई हैं। अगर कोई इमिग्रेशन ऑफिसर या यूएस वाले सुन रहे हैं तो भाई को डॉक्यूमेंट में तो इतनी प्रॉब्लम नहीं। Okay, without revealing too much, I grew up in लाहौर और वहाँ सारी ज़िंदगी गुजार दी। अच्छा। और फिर हम 20 साल के हुए, 19-20 साल के, हमने सोचा चलें कनाडा चलते हैं। और तो ये जो कनाडा का रास्ता बना था, तो ये अम्मी अब्बू ने बोला था या खुद ही बस? अम्मी अब्बू का यही इनपुट था। अच्छा। कि आप जो है यहीं से कर लो। अभी भी मेरी माँ मुझे कहती है, रोज़ मुझे फ़ोन आते हैं कि भाई इधर आ जा, अच्छी ज़िंदगी है, मतलब पाकिस्तान में पढ़ लो। अच्छा, बेहतर है। हाँ। लेकिन हमने थोड़ी सी ज़िद की और फिर भाई ने भी कहा कि देखा, अब बहुत तुझे एक्सपोजर मिलेगा, बहुत फ़ायदा है,
बहुत कोई काम धंधा कर लेगा वहाँ जाके। तो मतलब आपका खुद का ही आइडिया था कि कनाडा आना है? काफ़ी हद तक यस, अच्छा। काफ़ी हद तक हमारे पूछताछ में हमने देखा कि लोगों से पूछा कि कहाँ जाना चाहिए और फिर वी सेटल्ड ऑन कनाडा एंड नाउ वी आर हियर एंड इट्स बीन अबाउट अ ईयर एंड वी मेट वंडरफुल पीपल लाइक असद भाई और हमारी प्रोडक्शन टीम जो है साथ, वो भी शाउट आउट टू द प्रोडक्शन टीम, जैदी भाई अगर आप सुन Zeddy रहे और हैं दोनों शिपाटर बॉय, shout out to those guys. शाउट आउट टू दोस गाइस। So before selecting Canada, आपने कोई दूसरी कंट्रीज देखी? ऑस्ट्रेलिया वगैरह देखते ऑस्ट्रेलिया हैं ना वगैरह भी देखा था हमने। हाँ। और ऑस्ट्रेलिया वगैरह में यही हमने सोचा कि यार फैमिली है यूएस में, सिएटल में, तो इधर आ जाएंगे तो उनसे भी मिलाएंगे एंड माय फैमिली डज कम विजिट, बट फिर भी इतना अंदाज़ा नहीं हो गया एक बॉर्डर कितनी बड़ी चीज़ है। तो बस यही है, हम लाहौर के पले बड़े हैं और हम इधर आ गए। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। दिस मेरा बड़े तफरी सीन है कि सॉरी टू रैम्बल ऑन टू मच, पर मेरा कनाडा का इरादा था ही नहीं भाई। मैंने ना ओ लेवल्स की सिटी से, फिर ए लेवल्स की क्रेडो कॉलेज, गुलशन का क्रेडो है ना, आपको पता है क्रेडो बोलते हैं ना? क्रेडो क्रेडो बर्गर लोग क्रीडो so which is simultaneously you and not you because ये भाई ये लड़का जो है ना बहुत तेज आदमी है, ये फुल देसी बन के ये बर्गरों का मजाक उड़ाता है, फिर वो गोरा बन के देसी का मजाक उड़ाता है। so ओ लेवल आपका भाई लुढ़क गया 1 साल पहले एएस में, सही है? तो उसके बाद मैंने कहा यार पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम इट्स लाइक इट डजंट वर्क, यू नो, बिकॉज पूरी ज़िंदगी मैंने बाहर पढ़ा है। तो पाकिस्तान में जो एजुकेशन सिस्टम है आपको पता है वो एक वन साइडेड अप्रोच के साथ पढ़ाई करते हैं और रट्टा ज़्यादा, रट्टाफिकेशन टर्म सुना होगा आपने? रट्टाफिकेशन तो बहुत होती है और हमारी जो ऑडियंस सुनी है पाकिस्तान में उनको ये भी पता होगा बहुत रट्टा है और रट्टा तो बहुत लगाते हैं। तो उसके बाद मैंने अम्मी अब्बू ने बोला, अम्मी अब्बू का आइडिया था कि बेटा बाहर जाओ पढ़ने। तो उन्होंने, मैंने कहा ठीक है जाओ जहाँ बोले। तो हमने ऑस्ट्रेलिया का देखा पहले। ऑस्ट्रेलिया में यूनिवर्सिटी ऑफ वोllongong है, वहाँ एडमिशन हो गया, सब हो गया, वीज़ा वगैरह, मतलब बस वीज़ा चाहिए था, बाकी सब हो गया। लेकिन सुभान अल्लाह उसके बाद वीज़ा लगा ही नहीं, पता नहीं क्यों, like I don't know why, but like it just never worked out. And then my mother did istikhara the other day, and basically it's like she came up to me and she's like, we need to send you to Canada, and specifically Vancouver, and specifically in Vancouver SFU. And I'm like, why is that so specific, you know? It's very इतना specific. specific क्यों है? मतलब अल्लाह ताला ने ये भी नहीं बताया कि तूने कनाडा जाना है, उसने कहा किस जिप कोड में Yeah, जाना it है। was crazy, bro. And that's what my mom told me, right? That's what she got like the response for istikhara. So okay, let's do it. क्योंकि मेरा AS का वो सीन था ना, तो I applied and then I got an FIC. I did a stage 1 and stage 2 there, and then SFU में आ गया, and then joined the MSA, and yeah, it's just like, you know, it's crazy because Canada का इरादा ही था ही नहीं भाई। और क्योंकि it's like one thing is like मेरे सारे जो रिश्तेदार हैं ना वो सारे एक तो या तो यूएस में या तो अब यूएई की साइड, गल्फ की साइड में, या टोरंटो पर है। तो एक ये भी था यार, अच्छा हो घर वालों से ना थोड़ा दूर हो जाए बंदा। असल बात है बाहर जाने का मकसद भी ये था घर वालों से दूर होना भाई। I might get shot for saying that, but You won't get shot, don't worry. क्योंकि आपको पता है ना, इट्स लाइक जब बंदा बाहर खुद होता है और जब ज़िंदगी चमाटे पड़ती है ना आपको, चमाटे ज़िंदगी सी, तो बंदा खुद ही सीधा हो जाता है। खुद ही सीधा हो जाता है। लेकिन मैं फॉर द पीपल इन द ऑडियंस ये भी कहना चाहता हूँ, बहुत ही भाई सीधा हो जाता है बंदा, ज़्यादा ही सीधा हो जाता है। तो अगर आप कहीं जा रहे हैं बाहर, तो इफ़ आई कुड टेल माई 18-19-year-old self and something, it would be कि भाई तू ये वहाँ जा जहाँ पे तेरी फैमिली है, सीधी बात। क्योंकि फैमिली का जो सपोर्ट होता है ना, आपको लगता है कि बड़ा कोई मैं तीर मार लूँगा, इट्स बेटर टू हैव पीपल विद यू रादर देन गो आउट इनटू द वर्ल्ड एंड फाइंड पीपल। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो अब to the kids in the audience and to the people in the audience जो कि सोच रहे हैं कि भाई मैंने बाहर जाना है, if you're making priority list, make it based on, dude, where do I have the most family? And I think that is something that somebody who is coming here should know. Okay, बहुत support मिलता है, and we do have people, you do have friends, but that support, that familial support, that you cannot get without like a strong familial background. That's very interesting. मैंने तो उल्टा हिसाब किया था। तूने उल्टा हिसाब किया था? घर वालों से जितना दूर हो सकता है ना बंदा उतना हो जाए। भाई मैंने भी यही हिसाब किया था, लेकिन ये हिसाब मुझे लगता है कि जवानी में तो बहुत ही होता है ना कि तीर मारने का दिल करता है। हाँ हाँ। तो फिर लाइफ जब चपाटे मारती है, जब चपाटे लगते हैं तुझे, तो फिर
अलग ही हिसाब तो जो आपने स्कूलिंग की लाहौर में, वो कहाँ पे की? मैंने बीकन हाउस डिफेंस कैंपस से स्कूलिंग की। आई नो अच्छा। बहुत पॉश बर्गर स्कूल है और है भी बहुत बर्गर। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि यार we should talk about the situation of private schools in Pakistan. I have a lot to say about that. And सही I बात। think that तो आपने ए लेवल, ओ लेवल, आईजीज पढ़ा या मैट्रिक या? ए लेवल ही अच्छा, पढ़ा मैंने। सही। और मैं यही कहना चाहता हूँ delving into private schools. प्राइवेट स्कूलों में जो अब हालात हो रहे हैं, मुझे लगता है कि ज़्यादातर पाकिस्तानी बच्चे को नहीं जाना चाहिए प्राइवेट में भी जिस तरह या पब्लिक? प्राइवेट में, क्योंकि पब्लिक में जो कल्चरल कनेक्शन मिलती है ना अपने रूट के साथ, वो आपको पहुंचा देते हैं, आप तक पहुंचा देते हैं। जिस तरह आप जब शिपाटरों के साथ फिरते थे, तो यू वर समबडी हु ग्रू अप अब्रॉड और आपके पास इतना ताल्लुक नहीं था पाकिस्तानी कल्चर के साथ, और अब आपके अंदर पाकिस्तानी कल्चर ठोस दिया उन बॉयज़ ने, जो वो लड़के थे राहिम जो भी नाम है उनके, उनने ठोस दिया वो कल्चर आपके अंदर। हाँ। और आई बिलीव यू हैव ओनली बेनिफिटेड फ्रॉम इट, कोई नुकसान नहीं हुआ उसको। लेकिन मैं गया तो था प्राइवेट, लेकिन यार पब्लिक स्कूल्स में जहाँ तक मैंने देखा एजुकेशन का जो कंटेंट है वो बहुत आउटडेटेड है। और जो जिस तरीके से सोच सिखाई जाती है पब्लिक स्कूल्स में कि भाई सिर्फ एक ही तरीका है जो सही तरीका है और कोई तरीके हैं नहीं। प्राइवेट स्कूल्स में कभी कभार ये सीन होता है, बट लाइक इट्स कंपैरेटिवली अ लॉट लेस। व्हाट डू यू थिंक? आई डू थिंक कि रट्टा जो होता है और आउटडेटेड एजुकेशन, स्पेशली पाकिस्तान में जो बोर्ड्स होते हैं उनमें ये बहुत मसला होता है कि बहुत आउटडेटेड एजुकेशन होती है। हमारा बोर्ड अपडेट नहीं होता, हमारे 90s का कंटेंट होता है। और एटलीस्ट जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं, जब फॉरेन एजुकेशन आती है तो वो अपडेटेड इन्फॉर्मेशन होती है। बट आई थिंक दिस प्री डिस्पोजिशन दैट वी हैव, और ज़्यादा अंग्रेजी नहीं बोलना था पॉडकास्ट पे, पर जो प्राइवेट स्कूल में आपको सिखाया जाता है कि यार गोरों के चमचे बन जाओ, वो जो है जिस तरह सही आपको बात। आइडिया हो ही जाता है पाकिस्तान में, जो भी हमारा प्राइवेट स्कूल वाला लड़का सोच रहा है उसको पता है यार ये स्कूल होता है ना बर्गरों वाला होता है, ये बीकन हाउस के लड़के ना बर्गर होते हैं वगैरह वगैरह। वो जो अंडरस्टैंडिंग है, इट इज़ मेकिंग यू धोबी का कुत्ता, मतलब धोबी के कुत्ता ही बना सकते हो आप, सीधी बात। अब ना तूने अच्छी उर्दू बोलनी है ना तूने अच्छी अंग्रेज़ी बोलनी है। अब ये तो अगर हम यूके में होते और बहुत ही अच्छी कोई उर्दू बोलते हैं हम, या बहुत ही अच्छी अंग्रेज़ी बोलते तो मैं मान लेता कि भाई ये प्रिंस एडवर्ड वाली अंग्रेज़ी बोलता है। सही। अब तूने गालियाँ बकनी अंग्रेज़ी में और तूने उर्दू भी नहीं सीखनी, हाँ, तो तू धोबी का कुत्ता है, सीधी बात। सही बात जरा है। मुंबई वगैरह में होता है हाँ। कि भाई वो क्या मुंबई की बोली है। अब द गाइज फ्रॉम मुंबई इन द ऑडियंस, मुंबई में भाई इतने हद तक लोग बर्गर होते हैं अच्छा। कि वो क्या हिंदी तो बोल नहीं सकते। मतलब तू जो है ना, तू जाके बोलेगा वो करेंगे भाई असद भाई तेरी हिंदी इतनी अच्छी कैसी है, अच्छा। सीधी बात। ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट मेंशन किया था, गोरों का चमचा। ये पाकिस्तान में ये बड़ा वो स्टीरियोटाइप है कि बंदा अच्छी अंग्रेज़ी भूल जाए तो सक्सेसफुल उसको माना जाता है ना, उसको उसकी बात ज़्यादा सीरियसली ली जाती है। तो ऐसा क्यों लगता है आपको? जब गोरे हमें छोड़ के गए थे तो बहुत सी चीज़ें छोड़ के गए थे। लीगल सिस्टम हमारा अभी भी अंग्रेज़ी में होता है। आप सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट अभी भी अंग्रेज़ी में है। और यही मसले हैं जो हमें अभी तक तंग करते हैं। अभी तक हम गोरों के चमचे, गोरों को गए हुए कितने 75 साल हो गए, और इतनी देर में हमने क्या ही सीखा। एंड मुझे ये लगता है कि जब आप कि खुद इनसिक्योर होते हो ना अपने बारे में, तो फिर आप सोचते हो कि मैं वो बन जाऊं जो मैं नहीं। जो आदमी अपने आप में सिक्योर नहीं है वो और लोगों की तरफ जाएगा, वो सोचेगा कि यार मैं इंडियन हो जाऊं, वो सोचे मैं गोरा बन जाऊं, क्योंकि उसको लगता है मैं अगर सिक्योर नहीं हूं तो और लोगों में सिक्योरिटी है और लोग मुझे बताएंगे कि अमन चैन कैसे मिलेगा। और पाकिस्तान में क्योंकि हम एक बहुत डेवलपिंग इकॉनमी है, उसी वजह से अब हम गोरा बनने की कोशिश कर रहे हैं, या गोरिफिकेशन जो हो रही है पाकिस्तान में वो इसलिए हो रही है क्योंकि हम खुद बहुत इनसिक्योर हैं। और अगर आप अपनी आइडेंटिटी पे नहीं खड़े हो सकते तो फिर आप कहीं भी नहीं खड़े हो सकते। और सही बात है। तो ये आपने वैसे ज़बरदस्त एक पॉइंट निकाला है, मैं थोड़ी ऑडियो बढ़ा देता हूँ जी कि पाकिस्तान में ख़ास तौर में मैंने देखा है, वैसे जो भी ममालिक हैं चाहे कोई सी भी कंट्री से हो, तो वो हमेशा अपने कल्चर के बारे में बड़ा फ़ख्र करता है ना। तो ये पाकिस्तानियों में थोड़ा सा क्यों है कि यार either they run away from it, कि you know we want to disassociate ourselves with Pakistan, or they become like, you know, they're not very proud of it. And why do you think that is? मुझे लगता है एक
3-4 वजूहात हैं इसके, और पहली वजह इसमें यही है कि पाकिस्तान में हमें आइडेंटिटी क्राइसिस है हर पाकिस्तानी को, क्योंकि हम अपने आप को कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, लेकिन हमारी शादी पे बारात आती है। तो हम ये इस कन्फ्यूजन में हैं कि आप कितने % इंडियन कल्चर आप अपनाना चाहते हैं और कितने % मुस्लिम कल्चर अपनाना चाहते हैं। तो वो जो प्रॉब्लम है, वो जो मसला है कि भाई मुझे पता नहीं है मैं कितना मुसलमान हूँ, मुझे पता नहीं है मैं कितना इंडियन हूँ, भारतीय हूँ। मेरी बारात आएगी और ढोल बजेगा मेरी शादी पे, लेकिन निकाह जो है वो मौलवी साहब पढ़वाएंगे। तो इसमें what it means to be a Pakistani is a very newly minted identity. We do not have time with the identity, and we're still figuring out as a collective what does it mean to be Pakistani. Because if you've met any white guy, they have no idea what a Pakistani even is. Like oftentimes people come up to me. This French guy once came up to me and he said, "भाई तू अरबी बोलता है?" और उसने कैफ हालक मरहबा बोलना शुरू कर दिया। और एज अ पाकिस्तानी मुझे बहुत दुख होया इस बात पे कि पाकिस्तान की रेपुटेशन जो है इंटरनेशनल स्टेज पे इतनी अच्छी भी नहीं है कि उनको पता हो कि भाई मैं पंजाबी बोलता हूँ, हिंदी बोलता हूँ, उर्दू बोलता हूँ। और उसी की वजह से ये आइडेंटिटी क्राइसिस पैदा होता है कि हमें पता नहीं है कि हम हैं क्या, जिस पे हम फ़ख्र करें। अब जिस तरह पंजाबी जो होता है, सिंधी जो होता है, बलोची जो होता है, पठान जो होता है, ये लोग सदियों से चले आए हैं और इनके पास एक हिस्ट्री है, इनके पास इनकी जो तारीख़ है वो हम पढ़ सकते हैं और इनको पता है कि हम क्या हैं। और अगर आप पाकिस्तानियों से ये छीन लें कि भाई आप पंजाबी नहीं हो, आप सिंधी नहीं हो, पाकिस्तानी हो, तो फिर पाकिस्तानी यही पूछता है कि क्या होता है पाकिस्तानी, और हम अभी तक नहीं इसका कोई जवाब दे पाए। तो जो हमारे जो इंटरनेशनल व्यूअर्स हैं, अगर वो पूछें कि भाई वी वांट टू बिकम मोर इन्वॉल्व्ड विद द कल्चर इन द कंट्री, वो आप कौन से जो स्टेप्स दे सकते हैं उनको? इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए मैं यही बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान कोई एक मुल्क है, लेकिन उसमें बहुत तरह के लोग रहते हैं। जो सिंधी होता है, पठान होता है, बलोची होता है, जो पंजाबी होता है, इनके अलग अलग कल्चर्स हैं, इनके अलग अलग इनके तारीख़ है इनकी, और उनको समझना ज़्यादा ज़रूरी है। और पाकिस्तान क्या चीज़ है आप तभी समझ सकते हैं अगर आप उन कम्युनिटीज़ में जाएंगे जो पाकिस्तान में रहती हैं। और असद भाई जो हैं, अगर वो पंजाबी हैं तो हिज कल्चर इज़ दैट ऑफ पंजाब। अगर असद भाई कराची में बड़े हुए हैं तो असद भाई का कल्चर है ऑफ समबडी जो कि कराची में बड़ा हुआ है, और वो समझना जो है वो लाजमी है। और इसी की वजह से पाकिस्तानी जो है वो भटकता फिरता है और उसको ये नहीं अंदाज़ा होता कि मैं हूँ क्या चीज़, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ। ये हम वी लुक टू द वेस्ट के भाई अब गोरे बताएंगे कि क्या करना है हमने, एंड हम गोरे हमें देखते हैं और वो कहते हैं भाई तू पाकी है, सीधी बात है। अरबियों की तरफ देखते हैं, अरबी कहते हैं भाई तू तो टैक्सी नहीं चलाता है। और जब हम इंडियंस की तरफ देखते हैं तो इंडिया में तो पाकिस्तानी होना भी तो गाली है। और इस दुनिया में अगर हम पाकिस्तानी आइडेंटिटी के साथ नहीं खड़े होंगे तो कोई नहीं खड़ा होगा, क्योंकि अभी हमने इंटरनेशनल स्टेज पे गालियाँ ही खाई हैं पाकिस्तानी होने पे। सही बात है। If you guys remember last podcast, yeah, I told that this guy looks like Imran Khan. Let me show you, bro. I do not look like Imran Bro, Khan. this guy's a turtleneck right now, yeah. Let me show you, bro. This is a photo of हमारे Imran bhai. I'm gonna show it to the camera. I do not look like Imran Khan. Come on, man. How do you guys not see the resemblance, bro? Look at this. Look at that resemblance. So welcome back to Maple Chai, and we had some technical issues once again, and now we're back with a guest who is Daud. Daud has been living here for about 15 years, and he has a very interesting perspective of what it's like to come to Canada and settle here. So we'll be interviewing him for the rest of the podcast, and that'll be the closing note of this session of the podcast. So yeah. Asad bhai, if you have any questions to ask Daud, we'll be happy to have you. Take it away, my guy. So yeah. Hi everyone, I'm Dawood. I am a Chinese Canadian immigrant to Canada, and I've been living here for 15 years.
So I'm not an international student, but I've experienced the difficulties and the pleasures of coming to this great land. So the biggest difficulty that was coming here was definitely like missing the extended family. You see, in like most Asian cultures, I would say East Asian cultures especially, we have extended families. But in America and in Canada, they have what you call the nuclear family, which has been in place since the Cold War. The nuclear family includes only your mom, your dad, your siblings, and yourself. In Asian cultures, it's very important for people to have like extended family, like relatives, like uncles and aunties, and your grandfather and grandmother. When I left Shanghai, which is where I was born, I recall like living in a city where I can visit my grandfather every day. And when I came here, I did not have that anymore. And even if I did not have like, say like an uncle or auntie, we had what you call like close family friends who you would call uncle or auntie. When I came here, it was not like that at all. Like it was kind of like the experience of coming to a new land and not knowing the culture and the language and doing that with like such a small family, it's kind of nerve-wracking. I knew not like a single word of English when I came here. English is a very different language from Mandarin Chinese, which I spoke. I I did not know much about like the social etiquette of like going to like a school in Canada. Like I just kind of got thrown into elementary school. Is there a difference in like the social etiquette in Canada, like versus from other schools? Yes, like in China, like the teachers are kind of seen as like very respected. In Canada, they kind of try to be your friends, which feels really weird, from Right, them being like this revered, kind of almost parental figure to someone who's like trying to get along with you. right. And so like when like I came to class on the first day of school and this teacher was being all like casual and like trying to be my friend and stuff, it kind of feels weird. I kind of wanted like that authority figure at that time and I didn't get that. Right, right. Yeah. Interesting. That's interesting. So, in terms of like just making friends in general, did you notice a difference because of that model? Yeah, when I came to class, I saw many students that looked like me, like Chinese people, right? But they were born here, and I was like fresh off the boat. So Oh, I the tried, fobs that they I, call I it, tried yeah? speaking to them in Mandarin, Yeah. and they had no idea what I was talking about. So that was like a big cultural shock to me to see people that looked like me but didn't speak my Did language. you speak English before? I did not. Oh, I knew wow. not a word of English. So, Yeah. how was your experience learning that? Um, it was very interesting. Like I remember the first time I started using English was when I was playing tag on the playground, Hmm. and the first word I used was "you're it." Yeah. Yeah, I remember that game, man. Yeah, We. like we learn through use, and I Mhm. suppose when I was using it, that was the most common word I used. Yeah. We have a similar game in Pakistan. It's called Kabaddi, Yeah. which, like, essentially when you're saying tag, you're right, we say Kabaddi, and just keep chasing each other. Those childhood games are a vibe. So, in terms of like, do you visit back home anymore? I used to visit like every 2 years or so, you Okay. know? Like whenever I visit, like it's such a cultural shock, like going back to a place where everyone speaks your language Yeah. and then like the climate's different, the Hmm. food is different, and everything is so different. Like here, Right. like you're kind of used to being independent, which is good. We're all like individuals and we're encouraged to be strong individuals here in the West. But in China, you kind of have more of a communitarian culture. Like family is so important to people like in East Asia, and it definitely shows in the way that things are run. So here, how it's like, everyone's like kind of free for all type of thing. You're saying that's not the case in Not the China. case in Yeah. China. Like you're kind of doing things for your family. Right. Like for example, like home ownership is a big deal in China. It's kind of the same case here. But in China, everyone in a family, whether it's like the uncles or the aunties or your grandparents, they all pitch in like communally to buy like their grandchildren a house. Okay. Okay. Here, everyone's expected to buy a home with their own Yeah. savings and own income, which with with the way things are looking, that's becoming more and more unfeasible. Mhm. Yeah. 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 Oh, sorry about that. That's very interesting. So, in terms of like so how in touch are you with like both cultures as of right now? I used to be, obviously, when I came here, I was very fresh off the boat. I was a fob. I knew nothing about Canadian culture. Hmm.
around high school, I was becoming very whitewashed, very Canadian, and I was kind of losing touch with my old Chinese culture. I kind of started like adopting more Western ways of doing things. Yeah. Which included like having a sense of self, strong independence, and all that. All these things are very good. However, I also realized that being whitewashed is not exactly a good thing either. Yeah. I was losing touch with my culture. Firstly, I was also trying to be something I was not, and just trying to be more Canadian. I was essentially like deploying kind of like a self-hatred, you know what I Right. mean? Like I didn't like where I came from, which is Oh, interesting. problematic. So in terms of like, did your parents like support that type of decision where you were like, slowly just endorsing yourself in the Canadian culture, or your parents They were like, wanted me to come here to learn Canadian values. And okay, for them, Canadian values meant entrepreneurship, yeah, hard work, study, because Canada have some of the best schools. like work ethic and Work stuff. ethic, Yeah, yeah, like Canadians have excellent work yeah, ethic. Canadians are great at starting businesses, and Canadians are great at being like out the house at 18. yeah, That's the idea, because in yeah. China, people are not out the house at 18. Mm-hmm. However, like what they did not anticipate was like the high cost of living and some of the negative aspects of Canadian culture, which is this like obsession with individualism to the point where like family matters less. Like I started noticing when I was in high school that I started caring less about family, right? And that's kind of counterproductive to what a good Chinese family should be. Yeah. So now when you started realizing that, okay, I'm like slowly starting to change my mind in a point that I wasn't raised into, did you start feeling like you were battling yourself, or were you like, oh, this is a new type of dimension I haven't explored? I was I was definitely battling myself because um, when I was learning about like Canadianisms and Canadian history, I thought, man, I want to be more like them. Why can't my country back home be like Canada more? Because I thought this was the standard, this is the norm. This became normative in my mind. Mm-hmm. And what was my own culture became seen as backwards in a way, Mm-hmm. right? I had this sense that like I came from a backwards country and I had to conform with Western norms or Western standards. Yeah. So I was battling myself. So right now you've been here for 15 years? Yes, 15 years. So right now, after being settled for almost more than like, I'd say a decade, do you still find yourself battling in it, or now you're like comfortable adapting both, or have you sided with one? I'm very comfortable like with both cultures now, I would say. Yeah. Like I am in touch with where I came from. I'm also very in touch with like Canadian culture. And how do you like achieve both? Like kind of like how are you in touch with both cultures? Like How did I achieve this equilibrium? Yeah, That's a good exactly. question. Well, what I simply did was language. Language is so important. Like if you don't retain your native language, you're losing half the battle, right? That's half the war lost. So I just during high school I decided I'm gonna maintain my Chinese. I'm gonna practice Chinese more. I'm not just gonna use English exclusively, whether I'm at home or at school. I suddenly realized that like Chinese is a very important language to me and that I need to use it more. Two, it was kind of looking at the history of the West versus, well, say like China, because like both places have rich histories, Yeah. very rich histories. Um, when I started seeing things from a less Orientalist perspective, which by the way, Orientalism comes from the West, it's kind of this way of like looking at the East or whatever is not European or Western as like this exotic kind of more different place, like making the East the other. When I started looking at it not as the other, but simply as a different place, as a place that has its own history, its own cultures, I came to accept that. I had to essentially decolonize my way of thinking because it's it's not that like Orientalism or colonial attitudes are taught in schools. It's just that the
superiority or the dominance of Western culture is so apparent that teachers cannot help Yeah. but promote that, you know? Yeah. Like we all wear blue jeans and t-shirts and baseball caps to school, you know? Like that's very American culture, but it's just seen as the norm. So the friends that you have like back home in China, do you talk to them frequently? Well, I don't really have a lot of Chinese friends. I Mm-hmm. have Chinese Canadian friends, you know? But the Chinese friends I have back home, I basically left them in 2008. Right, right. Yeah. So, for example, the Chinese Canadian friends that you have right now, do you have like frequent discussions with them about, yo, we need to get involved with the culture? Absolutely. I have a really good friend named Jacob, and he's Texas, actually. He's from Yeah. Texas. He's Okay. he's the most American Chinese guy I ever know, man. Yeah. Like if this guy, if there was a single guy that could be more American, you can't find a guy more American than this guy. You know, he's like a freaking Texas rancher cowboy type of guy. You know, Yeah. he's got a boots and everything. Oh, Yeah. wow, that's always like a cowboy or something. Exactly. Anyway, he's been watching Peppa Pig to watch Peppa Pig in Mandarin so that he can learn Mandarin that way. Oh, wow. Yeah, so he's dedicated, you know. Like I had a good talk with him about wanting to revive Mandarin among Chinese Canadians, and he's taking it very seriously. Like he's watching Chinese cartoons, Yeah. Peppa Pig in Mandarin to learn Mandarin. Yeah. That's amazing, yo. It's cool to see people, embracing their culture. So like, because unfortunately, like in people of Pakistan, they're not as super in touch with the culture, or Yeah. nor do they feel the push to be in touch with the culture. So for someone like, let's say, just externally, what type of advice would you give them, and why should they be like proud of their own culture, type of thing? Well, for one, like I know English is so common these days, and high skill in English is seen as professional, as being essentially able to get you places. I used to be ashamed of having any form of accent. I used to be like, yeah, if you have an accent and you speak English, like, I don't know, man. Like you're like, you're like, you're just like too fresh off the boat for me. I used to think that way, you know? I used to think that like, oh, Yeah. accents. Why have accents? Why not just learn English from the beginning, you know? You should teach English in every country. And I no longer see it that way because I think I see accents almost as like a mark of honor, you know? If you have an accent, that means you're probably able to speak two or more languages because there are people in the US that speak only English and they think it's so superior. If you have an accent and you speak English, I truly applaud you because I think it shows that one, you have a language that you speak natively and you're also learning another language, which is very commendable. And secondly, don't be ashamed to wear like your own culture's clothes, right? Because every culture has a rich tradition of like of their own textiles, their own industries, and their own way of doing things. And many of these old forms of doing things or their old like clothes are still valuable to this day. When you wear these clothes and you wear them proudly, you're showing to the world that like you're not ashamed of who you are. You're not ashamed of your cultural identity. And I don't know how that's the case for Pakistan because I'm not as familiar with like Pakistani dress and culture. But for like the Chinese, right? Like we have people who now wear like traditional Han Dynasty style clothes, which we call Hanfu clothes, and that's very popular among like the youth in China, which I Yeah. find interesting, right? Like Yeah. it's not like a boomer thing, you know. Yeah. It's popular among the youth. So, coming back to like just the household stuff, do you have anyone apart from your parents specifically here, like your direct family, like your siblings and your parents? Like, do you have any other extended family members here? I have no extended family members here. Like I mentioned, Yeah. it's basically a nuclear family. Yeah. And nuclear family is pretty insufficient, in my opinion, for cultivating a strong foundation for like a child growing up in the West, in my opinion. I believe that for a lot of immigrants, they need extended family to really feel like they have like that familial anchor in this country, you Yeah. know? That's what I hope to do one day is that I should have like an extended family here. Yeah. Yeah. That's amazing, man. Do you have any questions, yo? I would love to. Could you ask him about living in Canada and how hard it is for somebody to adapt, and some tips we could have
You kind of did dabble in Yeah, those but topics. could we talk about what specifically somebody could do to meld in with other nationalities? Because our culture is very like monocultural. Like there's only one kind of person. So how do you go from a monocultural civilization to a multicultural one? And what things could you do to really meld with not just American culture or Canadian culture, but all kinds of culture? Well, I would say simply talk to people. Talk to people when you're, there's a saying like, when in Rome, do as the Romans do. But you can apply that to any culture. Like if you go to like your friend's household and say they use chopsticks, right? Practice using chopsticks. If you're eating with like Pakistanis or Indians and they use their hands, sit the way that they do and eat with your hands. That's something that I realize is so important is that there's a multiple correct ways of doing things. Um, when you read, about like people's cultural histories and their backgrounds, and you have that knowledge is so, so important. Having knowledge of people's histories helps a person understand and helps a person develop like that kind of mobility, like your social mobility, your network grows exponentially the more you know. People will be impressed with you just if you like adopt the way that they do certain things, right? Like if you're not like a guy who's like uses a fork at like a sushi restaurant, they're gonna respect you. Okay. Yeah. Interesting. It's a very interesting thing you've put on is, I mean, it kind of makes sense why you would want someone to kind of act similar and it creates more value. But specifically, like, let's say, when you were maybe settling in, let's go trace back to a couple of years back, and just trying to word this correctly. Let's see. Yeah, so it's like when you were settling in, did you face any sort of like, for example, like microaggression or aggression or even racism? Yeah, I had a vivid memory when I was a child when I was playing soccer with my dad Yeah. at a park. And then like we kicked the ball like somewhere very far, it ran off course. And then we ran after it and then there was a dog chewing on the ball, right? And it was deflated. And then, I was like trying to get the ball back and then this big guy comes in who was probably the owner of the dog. And then we tried explaining to him that that's all ball, But I guess we didn't know the right words or we didn't know enough English at the time. So that guy was just looking at us and like getting very angry and aggressive. Oh, wow. And that was like terrifying to me as a child, like not having the skills, the communication to be able to even like, I don't know, get your property back, right? Damn, Yeah. Because that was a big guy. He had like a dog with him, Yeah. And then we were just trying to get our stuff back, Yeah. Yeah. So And feeling that sense of powerness in like a country like that's so far away. did you ever feel the inferiority crisis or something? What is that word called? Inferiority complex. Complex, yeah, that. Yeah, in that instance, I felt very inferior because I'm like, this man has the power, this man has my stuff, and this man has like a dog with him, And I don't even have like the communication skills to be able to negotiate with him, So I felt totally inferior in that aspect. I wish I just knew English, I was like, what use is my language if I cannot make this transaction, if I cannot negotiate? Yeah, that's awesome, yo. Super glad you've touched on those topics. Yes. Do you have anything to add? No, Yo? nothing. Okay, Nothing. okay. We're probably going to close this, but thank you for your time, my guy. Yeah, thank you so Appreciate much. it. Thank you thank so you much for for coming having to the us. podcast. Yeah. And thanks for watching, viewers. This is Maple Chai. Maple Chai, session 2. Second episode. We are still trying to get the flow on where to steer these type of podcasts. If you guys have any suggestions or ideas that hey, it will be cool to touch on this, feel free to let us know and drop your comment down, share a like, Give do you have Instagram, dude, or do you have any social media? I do. You can follow me on Instagram at TheRealDavid2. Everyone give him a follow, yo. This guy's amazing, bro. Yeah. All right, man. Thank you. Thank you so much. Take care. Thanks for Peace out. watching. Woo!